So welcome everyone. Welcome to Sadaiva classes. Today we are going to take your next lesson known as Major Dhyan Chand. Name of the lesson is Major Dhyan Chand. So who is Major Dhyan Chand and what we are going to learn about this person? Chalo, let's see. So this is the photo of Major Dhyan Chand. Saturday, 15th August 1936. It was the day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin. Where is Berlin? Berlin is in Germany. Germany had defeated So Germany Germany has defeated Germany has defeated several teams to enter the finals against the Indian team. They were the host of the Olympics and they were sure for their victory. Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. देखो अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये समय था बिफोर बिफोर द इंडिपेंडेंस ओके बिफोर द इंडिपेंडेंस अपना बिफोर द इंडिपेंडेंस पीरियड वी आर स्टडिंग राइट नाउ इन 1936 क्या हुआ था ओलंपिक गेम्स चल रहे थे जर्मनी में जर्मनी में बर्लिन है बर्लिन उनका जो कैपिटल है वहाँ पे ओलंपिक गेम चल रहे थे और उनका उस वक्त हिटलर था वहाँ पे कौन था हिटलर वाज द रूलर तो वो वहाँ पे आया था और फाइनल मैच था इंडिया और जर्मनी के बीच में और मैच कहाँ पे था जर्मनी में सो दे वेर श्योर उनको लग रहा था हम ही मैच जीतेंगे बाकी सब वहाँ पे उनके बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पे आ गए ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन्ड हेवीली और उससे पहले क्या हुआ था बहुत बारिश हो गई थी द एंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉन्ग पूरे मैदान में पानी पानी हो गया था जमा होते थे बट 15th August being the last day of the games it was not possible to postpone the match any further. The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. तो पानी होता और इंडियन टीम को अभी क्या करना था सो दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड तो वेट ग्राउंड में खेलने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे एंड उसके पहले जो प्रैक्टिस मैच हुआ था ना उस वक्त वो जर्मनी से हार गए थे अबाउट 40,000 पीपल हैड गैदर्ड इन द हॉकी स्टेडियम कितने लोग आए थे 40,000 40,000 लोग आ रहे थे बगैर Yes, so to Germany against India, the Maharaja Baroda state, the Prince of Bhopal, and few other Indians had also come to support the Indian team. इंडियन को सपोर्ट करने के लिए महाराजा गए थे बड़ौदा के महाराज भोपाल के महाराज सॉरी भोपाल के प्रिंस एंड अदर फ्यू इंडियंस नाउ सी The match started exactly at 11 a.m. सुबह 11 बजे मैच चालू हो गया. The German team had adopted a novel strategy of using the Indian technique of short distance passes against the Indian team itself. They had resorted to a very aggressive play. The Indian team was offering an equally strong resistance. No team could make a goal during first half और आधा घंटा हो गया किसी भी टीम को गोल बनाने कोई भी टीम गोल बना नहीं पाई. During the 32nd minute, Roop Singh scored the first goal, hitting the ball towards the goalpost from a difficult angle. तो एक गोल बनाया रूप सिंह ने किसने बनाया रूप सिंह ने गोल बना दिया 32nd minute. In the second half of the match, the Indian team found a firm footing. The entire team played as one and made the three goals against the Germany. और तीन गोल बनाए कितने गोल बनाए तीन गोल बनाए Two of them were made by captain. The captain of the team. Captain कौन था टीम का ध्यानचंद था कौन था ध्यानचंद कैप्टन थे टीम के Okay, he was the captain of the team. However, the German players were also trying their level best to win. They too succeeded in making one goal. तो जर्मनी ने भी वन गोल बना लिया था एक गोल जर्मनी ने भी बना लिया था Now only a few last minutes were left. Dhyanchand had resolved to win the match at any cost without allowing Germany to make any more goals. His spiked shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. He removed the shoes and the socks and began to run barefoot. तो क्या हुआ उसके जूतों से उसको नहीं वो पानी जो वेट ग्राउंड था त्याला काही खेळता आलं नाही त्याला खेळता येत नव्हतं त्याला खेळता येत नव्हतं तो उसने क्या किया अपने जूते वो सब निकाल दिए सॉक्स निकाल दिए और ऐसे ही वो खेलने लगा यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग and his near magical game he began to send one pass after another to play in the D that is in the defenders or opponents area from where they could make goals they too did not let the passes go west the Indian team scored three more goals और तीन गोल बनाए Dhyan Chand would have easily made the goals himself from the own position, but
ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम। वो खुद भी गोल कर सकते थे लेकिन उन्हें खुद ऐसा नहीं किया, दूसरों को भी उन्होंने चांस दिया। ओके, दे ऑल्सो he also gave the chance to other person. Skillfully he took the ball away from the German defenders and made it possible for the players in the D to score goals. तो गोल उन्होंने बना दिए। The German strategy had proved fruitless. A defeat stared them in the face. Some of the frustrated German players then resorted a rough game. The German goalkeeper pounced on Dhyanchan and hurt him, but Dhyanchan was a true soldier. After a little first aid, he immediately returned to the field and held the spectators spellbound with the game. At last, he scored the last goal on the match. Just the game drew to a close. The Indian team had won the third in a row. It was a hat trick. Indians were थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो 3 बार उन्होंने ओलंपिक गेम मेडल जीत गया था। बहुत सारे दे ट्राइड, जर्मनी वालों ने ट्राई किया लेकिन वो हमारी टीम को क्या नहीं कर पाए वो। सर आवाज येत नाही, काय करायचं मग तुझं, 2 मिनिट थांब. सो although Hitler left the stadium before the match was over, he was impressed by Dhyanchand's game. It is said that German dictator had offered Dhyanchan the higher salary. अभी देखो, ये हारने वाले तो हिटलर चला गया लेकिन हिटलर ने देखा कि जो ध्यानचंद अच्छे से खेल रहा है उसने उसको ज्यादा सैलरी और ज्यादा पैसा देने की कोशिश की, ज्यादा रैंक भी दिया था जर्मनी आर्मी में, उसने ऑफर किया था if he agreed to play on behalf of Germany. But Dhyanchand turned down the offer. Dhyanchand ने वो offer reject कर दिया. After the celebration victory in the Olympics, Hitler awarded a special gold medal to Dhyanchand. हिटलर ने उसको एक special gold medal दे दिया. So you may be aware that hockey is our national sport. लक्ष्य या hockey is our national sport. क्रिकेट नहीं है हमारा, हाँ क्रिकेट हमारा नेशनल स्पोर्ट नहीं है, इट इज हॉकी। Major Dhyanchand's birthday, August 29, is celebrated as National Sports Day. In India, the famous National Stadium in Delhi is named after great hero Dhyanchand. Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of Dhyanchand's further and win great glory to our country, to great our to country, right? ऐसे ध्यानचंद के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। यस, क्वेश्चन आंसर देखो, इजी है क्वेश्चन आंसर्स, ये सब क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हो, लिख सकते हो। आणि जस्ट अ मिनिट।